Welcome to the tour of University of Engineering and Technology, Lahore, also known as UET. बचपन में हर बंदा उसके माँ बाप से एक बात ज़रूर सुनता है कि बेटा मैट्रिक में अच्छे मार्क्स ले लो, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिल जाएगा। और कॉलेज में आके ये बात सुनने को मिलती है कि कॉलेज में अच्छे मार्क्स ले लो, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाएगा। और आज महंगाई के दौर में अगर किसी स्टूडेंट को किसी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिल जाए तो वो एक बहुत बड़ी उसकी कामयाबी है। और एक गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए आज हम आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी यूईटी लाहौर का टूर देते हैं, तो हमारे साथ जुड़िए रहिए। क्या खूब कहा था इकबाल ने, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, यही न बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। और इसी बात को देखते हुए इकबाल के आज हम अपने यूईटी का एक छोटा सा टूर लेते हैं। National Library of Engineering Sciences. Department of Computer Sciences. Department of Mathematics. Mechanical Engineering Department. UET Lahore Auditorium Complex is a state-of-the-art facility located on the UET Lahore campus in Punjab, Pakistan. The complex consists of a main auditorium with a seating capacity of over 1,200 people, a smaller auditorium that can accommodate up to 300 people, and several conference rooms. The main block has a distinctive red brick facade with white accents, and its interior is decorated beautifully. The building has undergone several renovations over the years, but its original character and charm have been carefully preserved. और यहाँ से आगे हैं गर्ल्स हॉस्टल। सबसे पहले जो गर्ल्स हॉस्टल आता है वो तीजा हॉल, और इससे आगे हमें जाने की इजाज़त नहीं है, तो हम ज़्यादा आगे जा नहीं पाएंगे। तो इसके आगे सारे गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, तो हम यहीं से वापस मोड़ लेंगे, क्योंकि ये ना हो कि आगे गार्ड खड़ा हो और हमें पेशी भुगतनी पड़ जाए। Department of Civil Engineering. Faculty of Earth Sciences and Engineering. Petroleum Mining Geological Department. Department of Chemical Engineering. The stadium is named after the founder of Pakistan, Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah, and is one of the largest sports complexes in Lahore. The stadium has a seating capacity of over 5,000 people and is equipped with modern facilities. For a variety of sports, it is a popular destination for students. जे डॉट के बिल्कुल सामने है बोला ग्राउंड, और नॉर्मल डिपार्टमेंट के जो स्पोर्ट्स गालाज होते हैं वो यहीं पे होते हैं।
और बाबा जी रमज़ान में जो रात टाइम क्रिकेट और फुटबॉल खेलने के यहाँ पे मज़ा होता था फ्रंट लाइन में, मत पूछो, एंड लेवल मज़ा। और बिल्कुल ही भोला ग्राउंड से आगे है हमारी एक्सटेंशन बहुत अरसे से बंद पड़ी है, किसी ने इसका ठेका लिया ही नहीं। हमारा वैसे दिल था बहुत अरसे से कि इसका ठेका लेके यहीं पे कोई छोटा मोटा ब्रांड खोल ले, क्योंकि यूनिवर्सिटी से जाने का तो किसी का दिल ही नहीं। और बाबा जी अगर हॉस्टल में बैठ के गर्मी में पढ़ना हो तो वो पॉसिबल नहीं, तो उसके लिए बेस्ट ऑप्शन है यूईटी की लाइब्रेरी। यहाँ पे आओ, पढ़ो और साथ में इसी चिल का एंजॉय करो। Department of Architecture. The Grand Mosque was constructed in the late 1980s and has a capacity of over 5,000 worshippers. और ये रहा वो डिपार्टमेंट जहाँ पे हमने 4 साल गुजारे, IBM। ये वो डिपार्टमेंट है जिसको पूरी यूनिवर्सिटी बहुत हसरत की निगाहों से देखती है। हमें भी आज तक नहीं समझ आई कि क्यों देखती है। Student Service Center SSC. Automotive Engineering Department. University Workshops. जहाँ पे आपने यूईटी का नाम सुना होगा वहाँ पे आपने यूईटी पंगे का नाम तो ज़रूर सुना होगा। बहुत ही फेमस है भाईजान पंगा, एक मरतबा आपको ज़रूर पीना चाहिए। अब थोड़ी सी क्वालिटी कम हो गई है, लेकिन बाबा जी अभी भी जो ट्राई करें और वर्थ इट है। और अभी क्योंकि रमज़ान की वजह से ये बंद था, लेकिन शाम टाइम जो यहाँ पे रश होता है भाई एंड लेवल। If you look at what you have in life, you'll always have more. If you look at what you don't have in life, you'll never have enough. College Hall. Tariq Hall. Sultan Mahmud Ghaznavi Hall. Zubair Hall. Mohammed bin Qasim Hall. यूईटी हॉस्टलाइट बच्चों की ज़िंदगी का आगाज़ अब्दुल सत्तारी हॉल से ही होता है। इस्लाम में 2 हॉल्स हैं, लियाकत हॉल और कायद-ए-आज़म हॉल। नॉर्मली ये दोनों हॉल्स जो फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स को मिलते हैं, और अब हम यहीं पे रह रहे हैं क्योंकि हमारा सेमेस्टर एंड होने वाला है 8th सेमेस्टर। सो यहाँ पे भी बहुत सी यादें इस साल में बनाई हैं। मुमताज़ हॉल, नॉर्मली मुमताज़ हॉल 3rd ईयर में स्टूडेंट्स को मिलता है, और हमें भी 3rd ईयर में मिला था। और हमारा बेस्ट टाइम हॉस्टल लाइफ का मुमताज़ हॉल में गुजरा, जिसमें हम 5 दोस्त एक ही रूम में रहा करते थे। और ये यूनिवर्सिटी का दूसरा कॉर्नर है, बिल्कुल एंड, जहाँ पर 2 हॉल्स हैं, अल्लामा इकबाल हॉल और सर सैयद हॉल। और यहाँ पर नॉर्मली जो हॉल हैं ये अलॉट होते हैं फॉरेनर्स को।
और कहा जाता है ना कि आपको इल्म हासिल करो बेशक आपको चीन ही क्यों ना जाना पड़े। तो ये लोग जो नाइजीरियन स्टूडेंट्स होते हैं, दूसरे स्टूडेंट्स हैं, ये चीन तो नहीं गए तो पाकिस्तान आ गए। तो ये रहा इलामा इकबाल हॉल जो पीछे गुजरा है, और अब ये जो नेक्स्ट है ये सैयद हॉल है। तो ये हॉल जो है फॉरनर्स को अलॉट होते हैं। जो भी कभी यूईटी आया उसे ये जगह ज़रूर याद होगी। हमारे राइट साइड पे ये जो कुछ हाउसिंग सोसाइटी बनी हुई है छोटी सी, जहाँ पे एम्प्लॉयज़ वगैरह के घर वगैरह हैं यूईटी के, और सामने है हमारा अलमशहूर चरखी का गेट, जहाँ पे चीज़ों का तबादला वगैरह होता है। जो लोग जहाँ आते रहे हैं उन्हें इस चीज़ का बिल्कुल अच्छी तरह पता होगा। अब हम आपको दिखाते हैं हमारी यूनिवर्सिटी यूईटी का मशहूर कैफ़े बोला कैफ़े, यहाँ पे आपको खाने के लिए अमूमन हर चीज़ मिल जाती है। और ये जो भी आपको बंद नज़र आ रहा है उसकी वजह यह है कि जब हमने शूट किया तो रमज़ान का महीना है और इस वजह से ये बंद है इस टाइम। तो शाम टाइम इफ्तारी टाइम फुल इधर रश होगा। यूनिवर्सिटी आने जाने के लिए आपको ट्रांसपोर्ट तो ज़रूर चाहिए, और यूईटी की ट्रांसपोर्ट मेरे लिहाज से सबसे बेस्ट ट्रांसपोर्ट है। टोटल 21 बसेज़ हैं और ऑलमोस्ट पूरा लाहौर कवर करते हैं, तो डे स्कॉलर्स के लिए बेस्ट ऑप्शन है। Department of Architectural Engineering. Department of Product and Industrial Design. Department of Islamic Studies. जब कभी आप यूनिवर्सिटी में एडमिशन करवाने आए यूईटी के, तो आपका इस पाला इस एचपीएल के बैंक से जरूर पड़ा होगा। यहाँ पे जो रश की लाइनें होती हैं वो बहुत ज़्यादा। और ये रहा हमारा एडमिन ब्लॉक, जहाँ पे नॉर्मली बच्चों के एडमिशन वगैरह जब ये करने आते हैं अप्लाई वगैरह, तो नॉर्मली उनके एडमिन ब्लॉक से वास्ता ज़रूर पड़ता है। ये रहा हमारी यूनिवर्सिटी का लव गार्डन, और इसे देख के तजुर्बे की शेर याद आता है। जब अगले साल यही वक्त आ रहा होगा, न जाने कौन किस जगह होगा, बिछड़ने वाले तुझे देख देख सोचता हूँ, जब फिर मिलेगा तो कितना बदल चुका होगा। I hope this information helps you. Let me know if you have any other questions or need more information.